Assalamualaikum students, welcome to this session on Unit 5 Reaction Kinetics from your class 10 chemistry syllabus. In this video, we will cover the MCQs and short questions 1 to 4 with clear and simple explanations. This unit is all about the rate of chemical reactions and the factors which are affecting them. Let's dive in and make these concepts super easy to understand. MCQ number 1 is the rate of reaction blank as the reaction proceeds. Rate of reaction के साथ क्या होता है जब एक reaction proceed होता है? The correct answer is decreases because rate of reaction is fastest at start because there are more reactant particles. As the reaction proceeds, reactants gets used up. So fewer collisions occur, slowing the reaction. Initially, at the start of the reaction, chemical reactions, a lot of reactant particles are available. Okay? With passage of time, all of those get used up. So very few particles remain, slowing the reaction. First option, increase. No, it is not possible. It increases in some reactions if heat or pressure is added. कुछ रेयर केसेस में जब हम हीट या प्रेशर इंक्रीज करते हैं तब पॉसिबल होता है. Remains the same. No, not true. Reaction slows down naturally. Okay. May option D, may increase or decrease. Too vague or not supported by general kinetic behavior. मतलब ये आंसर supported नहीं है with the concepts. ठीक है. Question number 2. The activation energy for a reaction can be. Activation energy for reaction can be. The correct answer is none of these. इनमें से कोई भी statement activation energy of reaction के लिए suitable नहीं है. Activation energy is the minimum energy required a reaction to cover. Activation energy की definition क्या है? It is the minimum amount of energy which is required for a reaction to occur. It is a property of reaction not directly altered by changing temperature or concentration. It is more related with the reaction, not directly affected by changing temperature or concentration. Option A is incorrect because it is saying the increased by increasing temperature. Temperature increase rate of reaction, not the activation energy of the reaction. Increase by decreasing temperature. Again, temperature does not change activation energy. Decrease by increasing concentration of reactants. Concentration affects collision frequency, not activation energy. मतलब वो particles अगर increase हो रहे हैं reactants के तो वो उनके chemical reaction के collisions को increase करेगा. That is not relevant with the activation energy. Question number 3 is reactions with high activation energy are usually slow. Why? Because when activation energy is high, fewer particles have enough energy to react, so the result will be slow. एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए अगर वो हाई होगी तो बहुत कम पार्टिकल्स होंगे जो इतनी एनर्जी गेन कर पाएंगे, इतनी हाई एनर्जी गेन कर पाएंगे. So very few particles will be participated in the chemical reaction leading to slower rate. Why other are incorrect? First option is fast. High activation energy means fewer successful collisions. यही concept इस वजह से ये fast नहीं हो सकती. Exothermic. Exothermic tells about energy release, not the speed. Reversible. Reversibility depends on the energy profile, not just by activation energy. Total जो energy profile होता है उस पर depend करती है, activation energy से related नहीं है. Okay. Question number 4 is in a reversible reaction, catalyst lower the activation energy of the reversible reaction. Catalyst क्या करता है? activation energy को low कर देता है. कौन से reactions में? Option C, forward as well as reverse reaction. ऐसे reactions जो forward भी होते हैं और reverse भी होते हैं. Okay. A catalyst affect both directions equally by lowering the activation energy for both. A catalyst जो होता है वो
दोनों के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन ए वाज फॉरवर्ड रिएक्शन, नॉट ओनली फॉरवर्ड, reverse reaction, not only reverse reaction. Option D, forward reaction but increases for reverse reaction. No, catalyst never increase activation energy in case of just a reverse reaction. Next question is, which of the following is not factor affecting the rate of reaction according to collision theory? As per the collision theory, which one is not the factor that affect the rate of reaction? The correct answer is molar mass of reactants. Molar mass of reactants does not affect the rate of reaction as per the collision theory. Collision theory mainly focuses on particles concentrations, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे ऑप्शन ए में गिवन है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के हाउ मेनी टाइम्स दे कोलाइड, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ओरिएंटेशन एंड कैटलिस्ट, presence of catalyst. So other three options are comes under the collision theory that they do affect the rate of reaction. Just molar mass of reactants is the factor which doesn't affect the rate of reaction according to collision theory. Question number 6 is, how does a catalyst increase the rate of reaction? A catalyst कैसे increase करता है reaction को? The correct answer is, catalysts create a new reaction pathway requiring less energy so more particles can react successfully. By providing an alternate pathway with lower activation energy, ये क्या करता है कैटलिस्ट? अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है विद लो, जिस उस पाथवे की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन टू स्टार्ट, वो लो कर देता है. ठीक है, डिक्रीज नहीं करता नंबर ऑफ पार्टिकल्स को. ठीक है, अगर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा ना. इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, तो उसको ओवरकम करने के लिए पार्टिकल्स को बहुत कम पार्टिकल्स जो इतनी एनर्जी अचीव कर पाएंगे, तो भी रिएक्शन जो है डिक्रीज होगा. बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथवे विद हायर एक्टिवेशन एनर्जी. सेम वे कि एक्टिवेशन एनर्जी हाई हुई तो केमिकल रिएक्शन विल बी स्लो. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज, which physical parameter is not typically affected by the rate of reaction? इनमें से कौन सा which physical factor which is not, जो affect नहीं होता rate of reaction से? The correct answer is color of the reactants. Color of the reactants is the parameter which is not affected by the reactants. Reactants affect rate of reaction is related linked to the change in mass, gas formation and temperature. कलर ऑफ रिएक्टेंट्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये किसी रेट का मेजरमेंट नहीं है. ठीक है, इसकी बेसिस पे एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसकी बेसिस पे केमिकल नहीं है, इसकी बेसिस पे हम नहीं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते. क्वेश्चन नंबर 8 इज, which factor can affect the rate of reaction involving gases? गैसेस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है? द करेक्ट आंसर इज चेंज इन प्रेशर. द ऑप्शन गिवन हियर, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर ऐसी चीज है जो उसको अफेक्ट कर सकती है, बाकी नहीं कर सकते. ना चेंज इन सोलबिलिटी कर सकता है, ना चेंज इन वॉल्यूम कर सकता है, ना चेंज इन विस्कोसिटी कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 9 इज, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स जनरली. सरफेस एरिया किसी अगर सॉलिड का सरफेस एरिया इंक्रीज कर लें तो इससे क्या होगा? जनरली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, मोर पार्टिकल्स विल बी एक्सपोज्ड टू द कोलिजन्स, दैट्स व्हाई इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एमसीक्यू इज, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी? अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? द करेक्ट आंसर इज, हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द particles, means more temperature, faster particles motion, more collision and more effective collisions
and activation energy will be easily overcome. जो activation energy होगी, energy मतलब kinetic energy increase होगी तो of course activation energy को overcome कर लेंगे और rate of reaction will be more. फर्स्ट ऑप्शन हायर टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, नॉट पॉसिबल, वो तो वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा ना. हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, नॉट इट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी. हायर टेम्परेचर डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, नो दिस इज नॉट पॉसिबल. वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है बाय मोर कोलिजन्स. सो लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. Question number 1 is draw energy diagrams that represent the activation energy and show the effect of a catalyst. हमने एनर्जी डायग्राम शो करनी है जिसमें हमने कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है और ये शो करना है कि कैसे कैटलिस्ट अफेक्ट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को. द एनर्जी डायग्राम शोज दैट एनर्जी चेंजेस during during a chemical reaction. The reactants must gain enough energy to overcome a barrier called activation energy before forming products. A catalyst lowers this energy barrier, allowing the reactions to happen faster. Basically, किसी भी chemical reaction को start करने के लिए क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करके रिएक्ट कर सकें. वो एनर्जी अगर कैटलिस्ट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट के बगैर होगा, जैसे ये ऊपर हमें नजर आ रहा है, दैट एक्टिवेशन एनर्जी विल बी हायर. तो रिएक्टेंट्स को मैक्सिमम एनर्जी गेन करके इस ब्रिज को, बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने में, टू मेक द प्रोडक्ट्स. जो कैटलिस्ट है ये क्या करते हैं, ये उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं. उस एक्टिवेशन इधर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते कि उसको ओवरकम करे, नो, ये उस एक्टिवेशन रिक्वायर्ड एनर्जी को लो कर देते हैं जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स जल्दी से विद मिनिमम एनर्जी इसको ओवरकम करके, ये एक तरह से अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है. दूसरा पाथवे इनिशियल क्या था, ऊपर वाला एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, ये एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करके उसको इजीली ओवरकम करवा के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे. A catalyst lower this energy barrier, allowing the reaction to happen faster. The peak represent the activated complex. ये जो peaks हैं ये represent करती हैं activated complex के इन एनर्जी को अचीव करेंगे तो वो जो है complex will be activated. The higher curve is without the catalyst. जो ऊपर वाला higher curve है वो है activation energy without catalyst. The lower curve is with the catalyst, lower activation energy. Both curves starts from the same reactants and at the same products. Just ये कि rate slow है या rate high है वो फर्क पड़ता है. reactants या प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. कैटलिस्ट प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता, वहां से खुद को डिटैच कर लेता है. A catalyst lower the activation energy without changing the starting or ending energies of the reaction. ये एनर्जीज को चेंज नहीं करता, ये सिर्फ उस पाथवे को एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है. Question number 2 is what is the effect of catalyst on the following: the rate of reaction and the energy of activation. जैसे अभी हमने डिस्कस किया, the catalyst will increase the rate of reaction. कैसे? By allowing more particles to successfully collide. It does this by lowering the activation energy so more reactant molecules can overcome the energy barrier and form products. जब एक्टिवेशन एनर्जी को पाथ स्लो कर देगा, अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड कर देगा, तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी वो इतनी लो हो चुकी है कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली उतनी एनर्जी हासिल करके उस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. दूसरा क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है? द कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी for a reaction by providing an alternative pathway with less energy required for the reaction to occur. However, it does not change the overall energy of the reactants or products. And reactants और products के energy को नहीं change करता, ये just उसकी क्या करता है, activation energy को लो करता है, kinetic energy को affect नहीं करता. Question number 3 is why powdered zinc reacts faster with acid
देन अ पीस ऑफ जिंक, जो एसिड है वो पाउडर जिंक के साथ क्विकली मोर फास्टली रिएक्ट करता है सॉलिड पीस ऑफ जिंक के कंपैरिजन में. हाउ इज इट पॉसिबल? Powdered zinc reacts faster with acid because it has a larger surface area compared to a solid piece of zinc. This allows more acid particles to come into contact with zinc at the same time, resulting in more frequent and effective collisions. As a result, the rate of reaction increases. देखो, जब पाउडर्ड जिंक होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वो ज्यादा इन कांटेक्ट, मोर सरफेस एरिया ऑफ द जिंक विल बी इन कांटेक्ट विद द एसिड, तो जल्दी जल्दी वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन रेट विल बी फास्टर, मोर कोलिजन्स होंगी. जब एक सॉलिड पीस होगा जिंक का तो उसका सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया विल बी इन कांटेक्ट विद द एसिड, तो वो टाइम लगेगा उनको रिएक्ट करने में. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज लिस्ट physical parameters which are affected by reaction rates. Reaction rate से कौन से parameters हैं जो affect होते हैं, जो physical हैं. Change in mass due to the consumption of reactants or release of gases. अगर reactants consume हो गए हैं या gases release हो गए हैं, जो उसका mass होगा वो change होगा. Formation of gas, especially in open system where mass may decrease. Mass decrease हो जाता है, gases की form में evaporate हो जाता है. Temperature increases with exothermic reactions are due to the external heating. External reactions की वजह से temperature increase हो जाता है जब कोई chemical reaction होता है. Okay, pressure in gases increases in closed system when gas is formed. अगर closed system है तो वहाँ पे गैस बनेगी जो environment में release नहीं हो सकेगी, अंदर ही रह जाएगी, तो वो pressure को increase कर देगी. These parameters help monitor how fast a chemical reaction is occurring. So that's all for today. Thanks for watching. We have just completed the MCQs and short question 1 to 4 from unit 5 and explored the key ideas behind reaction kinetics. Keep practicing and you will master these concepts in no time. If you found this helpful, don't forget to like, comment, share and subscribe for more chemistry content. See you in next video. Stay curious and keep learning. Allah Hafiz.